Now next is nothing but the metabolic defect in the amino acid metabolism. It is very important. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं metabolism of individual amino acids and their defects. So metabolism we are not going to see because it is not easy to take. ये इसके ऊपर अगर डिस्कस करेंगे तो इसके ऊपर ही 5-6 लेक्चर जाएंगे. But tomorrow in a short I will explain you important amino acids and their metabolism. Defect याद रखना है आपको. So glycine first one is glycine. So defect in the metabolism of glycine, inborn errors, इनको inborn errors भी बोलते हैं, inborn errors. Glycinuria. Why? Due to defective renal reabsorption increased. Due to defective renal reabsorption increased the serum level of glycine. That is known as glycine. Why? Glycinuria. Primary hyperoxaluria. Primary hyperoxaluria. Due to defect in the glycine transaminase. ये एंजाइम याद रखना है. Glycine transaminase का डिफेक्ट होता है. That's why there is a प्राइमरी हाइपरऑक्सिलूरिया है ना. ऑक्सिलिक एसिड बढ़ जाएगा ना. ग्लाइसिन का डिफेक्ट है लेकिन ऑक्सिलिक एसिड बढ़ जाएगा, which result in the oxalate stones. It is also known as a primary hyperoxaluria and mainly due to decreased protein targeting. Next होता है phenylalanine, very important. So if there is defect in the metabolism of phenylalanine, so you are going to have phenylketonuria. Phenylketonuria, short में PKU, phenylketonuria. Now how ketone? Because in this, if there is defective metabolism, there is an accumulation of this metabolite known as a phenyl pyruvate keto. Phenyl pyruvate, which is a keto means which is a ketone in nature. That's why phenyl ketonuria. So deficiency of phenylalanine hydroxylase. So which block the conversion of phenylalanine to the tyrosine. तो phenylalanine का tyrosine में कन्वर्ट नहीं होता है और phenylalanine इंक्रीज होता है और उसका मेटाबोलाइट जो है उसका फिनाइल पायरुवेट वो जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया. क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज, डिफिशियंसी ऑफ डिफेक्ट ऑफ फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज. और क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है इसके? सो इफ देयर इज फिनाइलेक्टोन्यूरिया इट विल इंक्रीज मेंटल रिटार्डेशन, डिफेक्टिव माइलिन शीट फॉर्मेशन, इनसफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ मेलानिन, सेरोटोनिन, whatever tryptophan जिसको भी precursor है, the precursor wherever there is a tryptophan required for synthesis, so that is decreased due to this enzyme, decreased phenylalanine hydroxylase, deficiency of phenylalanine hydroxylase. है ना. देखो phenylalanine का अगर पैरा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन किया तो बनता है आपका ट्रिप्टोफैन, सॉरी टायरोसिन, मतलब ट्रिप्टोफैन नहीं टायरोसिन. तो फिनाइलालानिन का हाइड्रोक्सिलेशन करने के बाद में टायरोसिन बनता है. टायरोसिन से ही बाद में हम ये बनता है कीटोक्लोमाइन्स, राइट. we have seen. So phenylalanine hydroxylase enzyme will cause hydroxylation on a benzene ring present on the phenylalanine. If there is a defect of this enzyme, there is a phenylketonuria. It is known as a phenylketonuria because there is an accumulation of one ketone on the phenyl pyruvate, right? So there is a one test used for this known as a Guthrie test. Guthrie test used to diagnose the phenylketonuria. Test important. Bacillus subtilis is used for the assay of phenylalanine. The end product of this is nothing but the phenyl pyruvate, and it is detected by using ferric chloride test also. So याद रखना है phenylketonuria defect is nothing but the phenylalanine hydroxylase. Defective enzyme is a phenylalanine hydroxylase that leads to phenylketonuria. Okay, next we'll see टायरोसिन मेटाबॉलिज्म का डिफेक्ट. मेटाबॉलिज्म अपन देखेंगे बाद में. टायरोसिन मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट. सो इफ देयर इज डिफेक्ट इन द टायरोसिन मेटाबॉलिज्म देयर इज अ टायरोसिनेमिया टाइप 1, टायरोसिनेमिया टाइप 2. देयर आर 7 टाइप्स at least. Okay, so tyrosinemia type 1 due to deficiency of enzyme known as fumaryl acetoacetate hydroxylase. फ्यूमरिल एसिटोएसिटेट हाइड्रोक्सिलेज का एंजाइम का डिफिशियंसी होता है यहाँ पे, और मेलोनिल एसिटोएसिटेट आइसोमरेज, दोनों में से कोई सा भी डिफिशियंसी हो सकता है. टायरोसिनेमिया. सो बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस फ्यूमरिल एसिटोएसिटेट हाइड्रोक्सिलेज डिफेक्ट और डिफेक्ट इन द एंजाइम मेलासिटोएसिटेट हाइड्रोक्सिलेज, so what happens, tyrosine level will be increased and that result in the diarrhea, vomiting and cabbage like odor आपके पूरे बॉडी में, है ना.
कैबेज लाइक वाटर, आपका जो कैबेज होता है उसके जैसे वाटर बने, गोभी जैसा वास, दैट इज अ टायरोसिनेमिया टाइप 1. Thalassemia type 2 is known as a Richard-Hanhart syndrome. Richner-Hanhart syndrome. Thalassemia second. Thalassemia second को ही बोलते हैं Richner-Hanhart syndrome. So there is a defect in the enzyme known as tyrosine transaminase. Now it is characterized by dermatitis, lesion in the eye, rarely mental retardation due to blockage of tyrosine metabolism. There is an accumulation of tyrosine and its metabolites known as a Richner-Hanhart syndrome or tyrosinemia type 2. थर्ड होता है नियोनेटल टायरोसिनेमिया. नियोनेटल टायरोसिनेमिया, नियोनेटल मतलब क्या, बच्चों में होता है ये, इसलिए नियोनेटल मतलब बच्चों में. Absence of para-hydroxyphenyl pyruvate deoxygenase enzyme. Absence of para-hydroxyphenyl pyruvate deoxygenase enzyme. Okay. Now it is treated with this. If there is a neonatal tyrosinemia, now it is treated with the ascorbic acid. Okay, it is treated with the ascorbic acid. Are you getting my voice or not? Are you getting my voice? नेक्स्ट होता है आपका अल्केप्टोन्यूरिया. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं. अल्केप्टोन्यूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया और इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक यूरिन डिसीज. अल्केप्टोन्यूरिया और ब्लैक यूरिन डिसीज क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, आ चुके हैं. नाउ इट इज अगेन इनबॉर्न एरर इन द मेटाबॉलिज्म. इनबॉर्न एरर इन द मेटाबॉलिज्म. सो डिफेक्टिव एंजाइम इज नथिंग बट द होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज. होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, राइट, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज. तो ये एंजाइम डिफेक्टिव होता है इसमें. अल्केप्टोन्यूरिया और ब्लैक यूरिन डिसीज. Homogenticate accumulate in the blood and excreted in the urine, and oxidized form of this is oxidized form of this homogenticate is nothing but having black color or brown color. So compound has a black or brown color, and that's why it is known as a black urine disease. Black urine disease. So अल्केप्टोन्यूरिया is a metabolic. क्वेश्चन ऐसा आया था कि अल्केप्टोन्यूरिया is a metabolic defect of following in following metabolism, following amino acid metabolism. So it is a tyrosine defect. Tyrosine का बहुत सारा defect है. So alkaptonuria or black urine disease. Alkaptonuria or black urine disease. Next one is a tyrosine का again defect है, very important. Defect in the tyrosine metabolism. Okay, defect in the tyrosinase enzyme. Defect in the tyrosinase enzyme. Defect of biosynthesis of melanin. Defect in the tyrosine metabolism. Defect in the synthesis of melanin. Now this is known as a albinism. है ना? So you might have seen some people. आपने कुछ लोग देखे होंगे जो पूरे व्हाइट होते हैं, उनके ऊपर शरीर के ऊपर पूरा व्हाइट व्हाइट पैचेस आता है, व्हाइट पैचेस आता है. सो टायरोसिन डिफेक्ट क्या है? टायरोसिनेज एंजाइम का डिफेक्ट है, बिकॉज टायरोसिन इज आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन. मेलानिन क्या होता है? मेलानिन इज नथिंग बट द इट इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन द स्किन. सो ड्यू टू दिस डिफेक्ट इन द टायरोसिनेज, ओके, defect in the tyrosinase, defect in the biosynthesis of melanin. तो अल्बिनिज्म इज नथिंग बट द नेम ऑफ द डिसीज. अपन जो बोलते हैं अल्बिनिज्म मतलब कोड आना, है ना. अल्बिनिज्म इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इन बॉर्न एरर्स विद जनरलाइज्ड लैक ऑफ मेलानिन. इसमें मेलानिन बॉडी में नहीं रहेगा. Then leukoderma, another defect is that leukoderma and vitiligo. Vitiligo मतलब localized loss और degeneration of melanocytes. तो पर्टिकुलर जगह पे मेलानोसाइट्स जो है, मेलानिन कंटेनिंग सेल जो होता है वो उसका डिस्ट्रक्शन होता है. डिजेनरेशन ऑफ मेलानोसाइट, लोकलाइज्ड लॉस और डिजेनरेशन ऑफ मेलानोसाइट which will result in the white patches on the skin. ल्यूकोडर्मा जो है इनिशियल स्टेज है ना. ल्यूकोडर्मा मतलब अगर बाय बर्थ नहीं है तो ल्यूकोडर्मा बोलते हैं उसको, बाय बर्थ है तो उसको अपन अल्बिनिज्म बोलते हैं. इनबॉर्न एरर अल्बिनिज्म. अगर वो बाद में हुआ है तो ल्यूकोडर्मा आएगा. That also results in the graying of hair is due to the lack of melanocytes in the hair root. तो आपका जो बाल है वो भी ग्रे हो जाएगा, काला नहीं रहेगा. Because your skin color is due to this melanin. Melanin is a color pigment. Color pigment responsible for the skin of your color. Melanin. Another is their similar name is melatonin, which is a hormone which is responsible for the circadian rhythm. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. Albinism is defect in
ड्यू टू टायरोसिनेज डिफेक्ट इन द टायरोसिनेज एंजाइम। क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही आता है, आपको प्रॉपरली देखना है इसको। टायरोसिन, इफ देयर इज डिफेक्ट इन द टायरोसिनेज एंजाइम that leads to lack of melanin. If it is inborn, it is known as albinism, that is due to autosomal recessive disorder, that is due to lack in the gene. If it is not by birth, it is known as leukoderma or vitiligo. Moles on the body, moles, मस्सा आएगा आपके बॉडी के ऊपर, मस्सा। Moles in the body is due to the hyperpigmentation and hyperactivity of melanocytes. Hyperpigmentation and hyperactivity of melanocytes. जैसे मस्सा वगैरह आता है ना आपकी बॉडी में, आपके मतलब किसी के बॉडी में आ सकता है, मेरे नहीं, है ना। मोस्टली इट अकर्स इन द फॉरेन पीपल, जो बाहर के लोग होते हैं, जैसे है ना आपका रशिया वगैरह, रशिया के या फिर अमेरिका वगैरह, तो उनको क्या है कि वैसे भी उनको मेलानिन कम होता है उनके बॉडी में, दैट्स उनका कलर जो है ना स्किन का पिंक होता है ना, आपका अपने अपने जैसे स्किन कलर नहीं होता उनका, या फिर ब्राउन नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है, बॉडी अनबिहेव करती है, बिहेव नहीं करती प्रॉपर्ली, तो कभी कभी ओवर पिगमेंटेशन होता है, उनके स्किन के ऊपर बहुत सारे मस्से वगैरह होते हैं। ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म में, है ना, मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफेक्ट ऑफ ट्रिप्टोफैन। So due to defect in the tryptophan metabolism, you are going to have this Hartnup disease. Hartnup disease, it was discovered by Hartnup family. एक इनके फैमिली को ये डिसीज हुआ था, it was described by Hartnup family. It is a hereditary disorder characterized by low plasma level of tryptophan and neutralizes. You will get a pellagra like symptoms. ये Hartnup disease. याद रखना है, albinism is a metabolic defect of your tyrosine, alkaptonuria is metabolic defect of your phenylalanine, okay, leukoderma is also metabolic defect of your leukoderma, albinism, that is metabolic defect of tyrosine, Hartnup disease is metabolic disorder of your tryptophan metabolism, and phenylketonuria is due to the phenylalanine metabolism. Are you getting or not? Our next one is the cysteine. If there is defect in the cysteine metabolism, right, you are going to have cystinuria. It is a common inherited disease. Again, ये inborn error है. Common inherited disease of carrier cysteine, which is present in the kidney for reabsorption of cysteine, ornithine, arginine, lysine. Okay, ये अमीनो एसिड reabsorb करने के लिए एक cysteine होता है एक्टिव, है ना। यहाँ पे क्या होता है, कैरियर होता है। If that carrier is not present, then cysteine will be excreted in the urine, and that is known as cystinuria. Now cystinosis, cystine storage disease. ये cystinosis क्या है? It is a cystine storage disease. Defect in the cystine reductase enzyme. Cystine is a cystine in a crystal. Cystine crystal will deposit in the tissue, and amino acid urea will be there. The patient will die within 10 days due to cystinosis. Homocystinuria type 1 is due to the defect in the enzyme cystathione synthase. Homocystinuria is because of the defect in the cystathione synthase. If you want to read, you can read from the Satyanarayana and lot of books उसमें भी दिया है. Now very important disease is again there due to the defect in the branch chain amino acid metabolism. Branch chain किसमें होता है? Branch chain amino acid, valine, leucine, isoleucine. They are known as a branch chain amino acid. Now, due to defect in the metabolism of this branch chain amino acid, you are going to have maple syrup urine disease. क्या है? MSUD, maple syrup urine disease. क्यों? क्योंकि आपके यूरिन का स्मेल आता है बर्न्ड शुगर के जैसा, तो उसको बोलते हैं maple syrup urine disease. So urine of the patient will smell like a maple syrup or burnt sugar. So it is due to the defect in the metabolism of enzyme branch chain alpha ketodehydrogenase. Branch chain alpha ketodehydrogenase. Right? Now next step होता है इसमें intermediate branch chain ketonuria. Intermittent branch chain ketonuria. Same as above but less severe. वैसे ही होता है लेकिन severity कम होता है उसका. So very important. Maple syrup urine disease is due to the defect in the branch chain amino acid metabolism. Branch chain amino acid metabolism, है ना. Cystinuria तो cystinosis, homocysteine, इससे आप कोरिलेट कर सकते हो. Cystinuria मतलब metabolic defect of
फिनाइलिन तो नहीं हो सकता। सिस्टीन यूरिया सिस्टोसिस मतलब मेटाबॉलिक डिफेक्ट ऑफ ट्रिप्टोफैन तो नहीं हो सकता। तो सिंपल है ना, इतना कुछ हार्ड नहीं है। याद कैसे रखना है? now inborn errors in the amino acid metabolism. Okay, again you can see revision. Phenylalkylanuria is due to the phenyl defect in the phenylalanine hydroxylase. Tyrosinemia type due to tyrosine transaminase. Neonatal tyrosinemia is due to defect in the para-hydroxyphenyl pyruvate dehydrogenase. Alkaptonuria is due to the homogeneity set oxidase defect. Tyrosinemia type 1 tyrosinosis is due to the malonyl acetoacetate isomerase or fumarate acetoacetate hydroxylase. Albinism is due to the defect in the tyrosinase. ये important है, ये सब बहुत ही ज़्यादा। Now again inborn errors of amino acid, that is methionine, cysteine, cysteine. ठीक है, methionine। तो cysteine यूरिया क्यों होता है? cysteine यूरिया is because of the defective renal reabsorption. Cystinosis क्यों होता है? Because of the impaired storage, impaired cysteine utilization, defect in the lysosomal function. It is a cysteine storage disease, cystinosis. होमोसिस्टीन यूरिया टाइप 1 क्यों होता है? सिस्टेवन सिंथेसिस डिफेक्ट। होमोसिस्टीन यूरिया टाइप 2, that is due to N5N10 methylene tetrahydrofolate. Homocysteine urea type 3, N5-methyl tetrahydrofolate homocysteine methyl transferase. Cysteine cystathione due to cystathione, उसका ही जैसा नाम है cystathionase. ग्लाइसिन का मेटाबॉलिज्म को देखो, ग्लाइसिन यूरिया is due to defect in the renal reabsorption, defective renal reabsorption of glycine. Primary hyperoxaluria, that is due to glycine transaminase enzyme. Tryptophan का मेटाबॉलिज्म देखो, हार्टनप डिसीज, defective intestinal absorption. ब्रांच चेन अमीनो एसिड का जो डिफेक्ट है वो देखो, मैपल सिरप यूरिन डिसीज ड्यू टू डिफेक्ट इन द ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेस. Intermittent branch chain ketonuria, that is true, that is nothing but the variant of above. And hypervanillinemia, hypervanillinemia, vanillin transaminase. Isovaleric acidemia, that is to isovaleric CoA dehydrogenase. Then histidine का metabolism का defect होता है histidinemia due to enzyme defect histidase. Proline का metabolic defect होता है hyperprolinemia due to defect in the proline oxidase enzyme. इसके ऊपर क्वेश्चन 2-4 बार बहुत बार आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है अमीनो एसिड एंड देयर इनबॉर्न एरर्स। सो रिमेनिंग पॉइंट आई थिंक वी विल सी टुमारो। हो सके तो कल ये अमीनो एसिड का डिफेक्ट और एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ, और बाद में टुमारो विल बी द लास्ट सेशन फॉर प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स।